including 3 Rafale jets, 1 Su-30, 1 MiG-29, and a drone. But Indian officials have not confirmed this. भारत के तरफ से जब पाकिस्तान की सरहद को मुदाखलत करने की कोशिश की गई है, सॉवरेनिटी पर हमला किया गया है, यहाँ पर कोई इंटरवेंशन करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान ने भरपूर और मौसर जवाब दिया है। ये भी पहुंचाया है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय तैयारे राफेल की कीमत $288 मिलियन है। पाकिस्तान ने भारत को 3 तैयारे मार गिराए हैं। भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस के बाद भारत ने अपने 3 तैयारे गिराए जाने का एतराफ भी कर लिया है। People have been killed after India launched a military operation in Pakistan-administered Kashmir and inside Pakistan itself. And at least 3 people have been killed on the Indian side. मोहतरम नाज़रीन, भारत ने बिलाखिर अपनी बुज़दिली का सबूत देते हुए पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला कर दिया है, जिसमें तकरीबन 26 लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं और सारे के सारे तकरीबन सिविलियंस थे। या तो मस्जिदों पर अटैक किए हैं या फिर जमातों के अड्डों पर किए हैं, जबकि ये टोटल गलत बात है। असल में इसमें निहत्ते लोग ही मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने फिर जवाबी वार करते हुए इंडिया के 5 तैयारे मार गिराए हैं, जबकि इंडियन खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 3 तैयारे मार गिराए हैं। जबकि पाकिस्तान ने कहा है, पाकिस्तान के ऑफिशियल के मुताबिक 3 राफेल तैयारे, 1 MiG-29 और 1 C-30 पाकिस्तान ने मार गिराया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इंडिया के 4 ड्रोन्स भी मार गिराए हैं, जो कि दरअंदाजी करते हुए पाकिस्तान की सरहदों के अंदर आ गए थे। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइलों से हमला करके अपनी बुज़दिली का सबूत दिया है और उसका कहना है कि हमने पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ भी ऑपरेशन नहीं किया, हमने दहशतगर्दों के अड्डों को निशाना बनाया है। जबकि अता तारड़, जो कि वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान है, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा है कि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर हमला है, हम इसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे और जवाब देने का हक भी रखते हैं। ये तमाम वीडियोस आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह इंडियंस के जहाज मार गिराए हैं, किस तरह उसके ड्रोन्स मार गिराए हैं, सबके सब सबूत आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। आइए देखते हैं तमाम सबूत कि इंडिया के तारे किस तरह जमीन पर बिखरे पड़े हैं। आइए देखते हैं। As tensions escalate between India and Pakistan, local officials in Indian-occupied Kashmir told Reuters that 3 Indian fighter jets have crashed on Indian soil. Pakistan claims it shot down 5 Indian aircraft, including 3 Rafale jets, 1 Su-30, 1 MiG-29, and a drone. But Indian officials have not confirmed this. According to Pakistan's military, all engagements were defensive and targeted jets that had opened fire on Pakistani territory using long-range weapons from within Indian airspace. So far, India has only acknowledged that 3 jets went down. This marks the most intense military exchange. पाकिस्तान की तरफ से भारत के 4 मजीद ड्रोन्स गिरा दिए गए हैं। गुज़िश्ता रात से अब तक भारत के तरफ से जब पाकिस्तान की सरहद को मुदाखलत करने की कोशिश की गई है, सॉवरेनिटी पर हमला किया गया है, यहाँ पर कोई इंटरवेंशन करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान ने भरपूर और मौसर जवाब दिया है। ये ताज़ा तरीन खबर है कि 4 मजीद ड्रोन गिराए गए हैं। सियालकोट सेक्टर बताया जा रहा है जहाँ पर ड्रोन्स गिराए गए हैं। इससे पहले गुज़िश्ता रात भी 5 उनके जेट जो फाइटर्स थे वो गिराए गए हैं, इसके साथ ड्रोन्स भी गिराए गए हैं इससे पहले। इसका मतलब है भारत अब तक इस कोशिश में है कि दरअंदाजी कर सके। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तानी सरहद के अंदर और पाकिस्तान की तरफ से इसका भरपूर और मौसर जवाब दिया जा रहा है। यानी कि भारत पैसिफाई नहीं होने दे रहा, सिचुएशन को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा है। इस साइड पर वो अपनी दरअंदाजी कर रहा है। पाकिस्तान अलर्ट है और यही इस अलर्ट होने का जवाब है कि 4 मजीद भारतीय ड्रोन्स गिरा दिए गए हैं।
पाकिस्तान ने भारत के सिर्फ 5 तैयारे नहीं गिराए बल्कि भारतीय फिजाइया को $1 अरब मालियत का नुकसान भी पहुंचाया है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय तैयारे राफेल की कीमत $288 मिलियन है। पाकिस्तान ने भारत को 3 तैयारे मार गिराए हैं। एक MiG-29 तैयारे की मालियत $30 मिलियन है, एक SU-30 तैयारे की मालियत $62 मिलियन है। पाकिस्तान ने भारत के सिर्फ 5 तैयारे नहीं गिराए बल्कि भारतीय फिजाइया को $1 अरब मालियत का नुकसान भी पहुंचाया गया है। भारतीय तैयारे राफेल की कीमत $288 मिलियन है। एक और आपको बताएं तो भारतीय तैयारा गिरने की फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। पाक फिजाइया ने भारतीय जारहात का दंदाने शिकन जवाब देते हुए 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस के बाद भारत ने अपने 3 तैयारे गिराए जाने का एतराफ भी कर लिया है। एक वीडियो में देखा गया है कि भारतीय जंगी तैयारा पाम्पुर के इलाके में जा गिरा है। India and Pakistan have been exchanging a barrage of fire across the line of control. At least 26 people have been killed after India launched a military operation in Pakistan-administered Kashmir and inside Pakistan itself. And at least 3 people have been killed on the Indian side. Now, India struck multiple targets overnight that it said were terror training sites. But Pakistan says mosques and civilians were hit, calling it an act of war. Charles Stratford reports. In the light of day, the damage assessment. Locals say this mosque in Pakistan-administered Kashmir was destroyed by an Indian missile overnight. Other strikes hit targets deep into Pakistani territory. It has been destroyed in front of you. In the night, the entire neighbourhood was in fear and panic, and the entire population fled. We strongly condemn this cowardly attack by India. India says it was targeting what it calls terrorist infrastructure 2 weeks after an attack at a popular tourist destination on its side of the disputed border killed 26 people. India blamed Pakistan. Islamabad denied any involvement. Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate and responsible. Pakistan said India's response was unprovoked, an act of aggression that will not go unpunished. We were apprehensive that India will attack Pakistan without justifiable cause, and they have done so. And Pakistan has defended itself. In some places, the explosions knocked out power, forcing people into the streets in the middle of the night. There was a loud noise of 10 to 12 shells, and we saw them coming from above, but we don't know where in the city they hit. But the noise was very loud. The whole city was scared. Heavy shelling continued throughout the night and into the morning across the line of control. I was on duty. Suddenly shelling started and I was injured in the shelling. The worst affected, as always, as I've often argued, are going to be the people in the region, the Kashmiris, who are caught between the competing and proprietorial and rival postures and attitudes of India and Pakistan. Pakistan's military says it shot down 5 Indian aircraft and a drone. India has yet to respond to those claims. Charles Stratford, Al Jazeera. Going to speak to our correspondent Kamal Haider now. He joins us from the Pakistani capital, Islamabad. And Kamal, Pakistan saying that this is an act of war. But what else have authorities there said? We lost contact. I lost IFB. It looks like we have lost our connection with Kamal. If you can hear me, yeah. What? I can hear you now, sorry. Fantastic. Yeah. Kamal, can you just give us an update on the latest that authorities there have said? Well, first of all, according to the Pakistani military spokesman, General Ahmed Sharif, the Pakistani aircraft that engaged those attacking Indian aircraft never crossed the border into Indian airspace. They use BVR, which is beyond visual range missiles, and Pakistan is now claiming that at least 5 of the Indian fighters were shot down. That includes 3 Rafales, according to the details they have released, 1 Sukhoi 30 and another MiG-29. Also, Pakistan has attacked across the border military positions in Pakistan, across the border
in Indian-administered Kashmir. The Pakistani Prime Minister right now is chairing a high-level meeting of the National Security Committee of the Cabinet. He's likely to address the nation after that. But across Pakistan, people were woken up late last night when that Indian airstrike unfolded. In a little while, the local television networks will be airing the funerals of those killed in last night's attack. Pakistan has also said that it has taken strong exception to Indian threats of what Pakistan calls water terrorism, and Pakistan says that that will be an act of war. Also reports coming in, as you mentioned, the line of control is hot again. It should be remembered that after 2019, there was a ceasefire agreement between the two sides. That seems to be now over. And the important thing to note now is what happens next, because we also monitored the Indian military briefing just a little while ago, and they made no mention of the fact they did not refute Pakistan's claims that those aircrafts had indeed been lost. Pakistan, on the other hand, saying that all its fighter jets were able to return to base unharmed.